Assalamu alaikum friends, and welcome back to our Microsoft Excel Formulas and Function Series Lecture 3. Formulas की बात हो रही है और errors की बात ना हो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर आप formula के साथ काम कर रहे हैं तो बार बार आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे आपसे कोई ना कोई error commit हो जाएगा. So to know about the different types of errors and how to resolve them can really make your experience a much worthwhile. So let's take a look. So अभी हमने क्या क्या एरर टाइप डिस्कस की. सबसे पहले एरर हमने डिस्कस किया वैल्यू कांट बी डिस्प्लेड. सो लेट्स जस्ट से कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को विद समथिंग लाइक 1 बिलियन. तो एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि समटाइम्स वो उसको इस तरह दिखाता है, अदर टाइम्स वो उसको इस वैल्यू को जो हैश साइन होता है उससे दिखा रहा होता है. तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि हैश साइन जब आ रहा होगा, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वैल्यू कांट बी डिस्प्लेड. इट डज नॉट मीन कि वैल्यू इज नॉट देयर, वैल्यू इज देयर बट इट कांट बी डिस्प्लेड. द साइज ऑफ सेल इज नॉट इनफ एंड द ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट इट इज जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस सेल. जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे इंक्रीज किया तो इट्स वर्किंग फाइन. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट एज वेल. नेक्स्ट हमारे पास था नेम एरर. नेम एरर कब आएगा कि अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम यूजिंग एवरेज बट आई एम गिविंग द रॉन्ग स्पेलिंग, राइट, एवरेज, एंड जस्ट टेकिंग these. There's an error because the syntax is incorrect. I have to correct this right and it is resolved. Value error, let's say यहाँ पे जो सेल्स मैं प्लस कर रहा हूँ उनमें से एक सेल में मैं डाल देता हूँ a numerical value. So now Excel can't add these. A cannot be added. So that's why there's this value error right there. Divided by 0. Naturally, if I go and do it like this, it gives me this div 0 error right there. Reference error, अगर मैंने कोई एक सेल को पूरे को डिलीट ही कर दिया let's just say, it's a reference error because you are already referring to a particular range of cell that no longer exists. So it gives this error right there. And finally, not applicable. Not applicable ऐसे होगा कि अगर let's say मैं VLOOKUP यूज कर रहा हूँ, VLOOKUP, and I'm asking it to search for some value like Imran in this range, जिस range में सारे गोरे. I say return the 1 for me. So it gives not applicable error because this value Imran is nowhere to be found in this list. So I cannot return anything. It's not applicable. There is no value. Not available. You can call it not available, right? So that's it. That's a quick review of the error types and how you can work around with it. Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.